सर ऑप्टिक्स कितना हार्ड चैप्टर है, सीईटी का कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो ना। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको जो मेथड बताऊंगा, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ओनली इन 10 सेकंड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल पर क्वेश्चन आए तो जस्ट राइट sin c is equal to small number upon bigger number, where c is critical angle. अगर दो velocities दिए हैं तो sin c is equal to small velocity upon bigger velocity. अगर दो refractive index दिए हैं तो sin c is equal to small refractive index upon bigger refractive index. अगर दो wavelength दिए हैं तो sin c is equal to small wavelength upon bigger wavelength. Just small number upon bigger number is equal to sin c. इस ट्रिक को सॉल्व करके आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसे और बहुत सारे ट्रिक्स और शॉर्टकट के लिए प्लीज रिफर टारगेट पब्लिकेशंस MHT CET PSP बुक। सलीम सर 2024 में ग्रेविटेशन चैप्टर से मैक्सिमम हाइट इस टॉपिक के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस टॉपिक के लिए कोई ट्रिक है क्या? आपकी बुक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई किया गया है। सॉल्यूशन बिकम्स वेरी वेरी लॉन्ग। आई विल गिव यू a method in which this question will be solved in 5 seconds. Just apply the formula H is equal to R divided by V upon V, the whole square minus 1n. In this question, V upon V is 3. So your answer will be H is equal to R by 8. We could solve it orally. ये ट्रिक से आप ये सारे PYQ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। और ऐसे और ट्रिक्स के लिए रिफर कीजिए MHT CET Physics by Target Publications. Hi Salim sir. Hi, how are your studies? I'm fantastic sir. Studies are going little hectic, but the MHT CET candidates have another question for you. Let me see the question. How to solve the question about shunt? Yes, the concept of shunt is very important. I'll give you a simple trick. Just apply the formula S upon S plus G is equal to small number upon bigger number, where S is a shunt and G is resistance to the galvanometer. Suppose it is given that my instrument was reading 5 ampere. Now I want to read up to 100 ampere. Then apply the formula 5 upon 100 is equal to S upon S plus G and cross multiply and get your answer. What a fab trick sir. Thank you so much. By this trick you can solve all these questions. For other important chapters like AC circuits, effect of electric current, electromagnetic induction, you want to get all these types of fabulous short tricks, then please refer to MHT CET Trans series by Target Publications. Hi Salim Sir, MHT CET में is there any easy method to solve wave optics? In wave optics, the most frequently asked question is the bright fringe of lambda 1 coincide. Remember the word coincide in the question. The bright of lambda 1 coincides with the bright of lambda 2. To get the answer, just divide lambda 1 by lambda 2 and cross multiply. You will get the answer. And all these type of questions can be solved from this book. All more tricks are given in this book. PSP published by Target Publications. I'll always highly recommend this book for all these type of smart tricks. Wow, what a nice trick sir. Thank you.